हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीन एन एजुकेशन हब। आज है 8 अक्टूबर 2022, दिन है सैटरडे और आज हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम योर सक्सेसर, लॉ मिनिस्टर राइट टू जीआई window for collegium he had closing. If recommendation as per procedure, Justice Chandrachud must senior Supreme Court judge will have to 2-year term. With a month failed for the retirement Chief Justice of India U.E. Lalit, on November 8, the government Friday initiated the proposed appointment of next Chief Justice of India, asking to incumbent to recommend his successor. 2-3 in collegium over the naming judge to Supreme Court via not stand of the meeting. ये जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंट होती है, जो सक्सेसर उनके चूज करने का आ गया लॉ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो इसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड of the panel Supreme Court status for the Dalit converted, delaying tactics till face bias, say Dalit Christian Muslim organization. Center have appointment 3-member commission head by the former Chief Justice of India K.G. Balkrishna to consider the possibility of granting Supreme Court status. The schedule caste status a new person who has historically belonged to schedule caste but have not converted to religious other than the Hinduism, Buddhism, Sikhism, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। According to notification issued Thursday, Union Minister Social Justice empower the commission will also include the retired IS officer Dr. Ravindra Kumar Jain and UGC member Professor Sushant Yadav as a member, and commission will have to submit the report ministry in 2 years said. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। आफ्टर यूके मिनिस्ट्री भेजा हर इंडिया से बोथ साइड कीन ऑन द FTA. The day after Britain Home Secretary Sulabh Barvanman cast doubt over the proposed free trade agreement with India, with linking with the issue of migration and saying that the Indians are the largest group of people who overstay and visa in UK. New Delhi has said the both sides are keen to adopt the FTA at the earliest. There is interest in both sides concluding the FTA at the earliest. Understand the intensive decisions are underway toward the continuing. Arindam Bagchi, Minister of External Affairs spokesperson, said Friday asked to both deadline, and Bagchi said, I think Diwali was set to goal and that is the goal. Best case scenario will be growth rate with the 7% hurdle in front. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हमारे देश को जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने कहा कि बेस्ट केस सिनारियो हो सकता है ग्रोथ रेट के लिए 7% हैंडल टू इन फ्रंट, the most high frequently indicated showing that upstick in the domestic economy even as a risk stemming from the global factor from loom larging the external front. The best case scenario for the Indian economy will be the growth rate 7% handled in front of it, chief economic advisor B. Anand Nageswaram ने कहा है शुक्रवार को। 7 months after the booking, former chief Fontraf case, Pune Cop filed the closure report. जो 7 महीने के बाद में लॉन्च किया था FIR against the IPS officer Rashmi Shukla, accusing her of illegal tapping phone of some leading political leader in Maharashtra. Pune City Police has filed the closure report in the matter of against the former commissioner. और RBI ने लॉन्च किया e-rupee pilot soon to can be based on token or account. The RBI Bank of India, Reserve Bank of India, Friday में indicated कर रहा है that will be soon commercial limited pilot launched for much awaited e-rupees and central bank digital currency for specific use cases. The e-rupee, akin to sovereign paper currency, but take a different form, exchangeable at the per with the existing currency, and will be acceptable as the medium of payment and legal tender and safe store of value, and the central bank said. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पर जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट पे जो एक्सप्लेन किया है आत्मनिर्भर इन डिफेंस इंडिया इंडो स्पेसिफिक इंडिया एंड अदर्स। ये कंपेयर किया गया है इंडिया को इंडिया स्पेसिफिक के रिलेटेड में जो कौन सा रैंक इंडिया के लिए सूटेबल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड मिलिट्री स्पेंडिंग इन द इंडिया स्पेसिफिक रीजन। इंडिया चौथा नंबर पे आता है एक्सपोर्टर के, और इंपोर्टर के रैंक में 1 नंबर आता है, और इंडिया के लार्जेस्ट सप्लायर हैं
रसिया और उसके मिलिट्री स्पेंडिंग है 76,598 और स्पेंडिंग रैंक है 2। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। इंडिया रैंक फ्रॉम fourth among the 12 Indo-Pacific nations in the self-reliant arms production capability, according to the study released this month by the Stockholm International Research Center, जो सिफरी हर साल ये हर महीने रिलीज करता है। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नोबेल स्टेटमेंट आज वार रेजेस। नोबेल प्राइज जो इस साल की पीस प्राइज है वो दिया गया है एलिस्को बेस्किलो, जो बेलारूस के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, और मेमोरियल को और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी को, ये तीनों दो ऑर्गेनाइजेशन और एक लोगों को दिया गया, इंडिविजुअल को। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज फॉर द 2022 अवार्डेड टू द जुबिलियस Belarus civil rights activities and the right of the organization each in Russia, Ukraine, and put the focus on the Russian war in Ukraine. Now in the 18 month, the common thread among the winner of the prize is the stand and directly indirectly against the Russian an ally of Russia. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। Nobel Peace Prize, which has been the often minor to West current geopolitical choice, has been given to jointly an individual and two organizations who stand directly indirectly against the Russia. उसके ऊपर यार अगले साल के जो नोबेल पुरस्कार था जर्नलिस्ट मिसा रईसी और दमित्री मोर्तोवोक को दिया गया था 2021 में। नोबेल पुरस्कार जो कमिटी सेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्नलिस्ट हु स्टैंड फॉर दिस आइडियल इन द वर्ल्ड इन व्हिच डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस फेस इंक्रीजिंगली डाइवर्सिंग कंडीशन। उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। इस साल के नोबेल पुरस्कार एक लोगों को और दो ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए। पॉलिटिक्स एंड पावर, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ चेयर इन इंडिया, the Godrej Archive, the document the preserve and legacy of the Godrej Group, published by the Great Truth and Regret, a history of the typewriter in the India। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया मेड सिरप डेट इन गाम्बिया, वी नो सो व्हाट वी नो सो फार। द अर्ली दिस वीक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया था अलर्ट, जो फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप है उसको could potentially linked to acute kidney injury in children 66 dead in the West African nation Gambia। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया कि गाम्बिया में ये चीज क्या हुआ कि जुलाई से कंट्री में एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट हैव इम्प्रूव्ड द सडन इंक्रीजिंग द केसेस ऑफ children ages of 5 months to 4 years reporting the hospital accused the kidney injury by August 32 cases and 28 deaths had been reporting the local media court Ministry of Health saying that in August Edward Finance small teaching hospital there is no rare conditional currently under the observation pediatric pot person sample of the collecting from the affecting children and awaiting the result of lab। Our doctors are working very hard to establish their causes of condition। ये गैम्बिया पे रिपोर्ट किया गया था कि 4 सिरप की वजह से जो फीवर कफ और एलिस्ट कोड की वजह से नेक्स्ट मंथ से अलर्ट जारी किया गया कि उससे लोगों की बच्चों की जान जा रही है, तो उसके ऊपर ये बैन किया गया है। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया। ये इंडिया मेड कफ सिरप थे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो एडिटोरियल के पेज पे है। widen down the with policymakers flagging the headwind and slowing the global economy, tasks of recovery seem to more challenging, with the global economy environmental taking a run into the verges and look for the Indian economy also appear to be dimmed। On the Tuesday, World Bank ने लोअर किया फोरकास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है 6.5% होने वाली है, जो पहले से 7.5% की उसकी फोरकास्ट की गई थी, उससे 1% कम कर दिया गया। Downward the revision is based on the bank assessment that the monetary policy is tightening across the world and slip over the Russian-Ukraine war and wages on Indian economic outlook, and revised estimation comes day after the RBI lowered than the forecast economic growth to 7% and down from its earliest projection of the 7.2%. Till now, the ruling deviation had been the rather sanguine about the current growth protest. After all, despite this downward revision, India is likely to be one of the fastest growing economy in the world, and however, the policymakers have now begun to voice concern of the state of the economy। After the next article, people in poor places. Government need to restore policy balance, combine the targeting poor people with transposing into poor places. Chile recent rejection the draft of
After some contribution is made for the free housing of job the government and give the glacier constitution right and legislative digital disconnection and world explored government debt and was an act of the consider the civic minority. The verdict created optimism about the wisdom of crowd over the madness of the mob. Nervia fallacy and concept of the comprising the existing paradigm and second best solution is idealistic, impractical, and unrealistic one is the form of perfection. It's economic decision causing the current pan in Punjab, Sri Lanka, Venezuela, Mexico, and Bolivia. We agree to the model of the welfare state, but if worrying for the spending could make one country rich, then the no country will be poor and state government will be sustainable and create the high paying jobs, rising the productivity of five places. There are the some of the not geographic. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देखिए देर आर नो poor people only people in poor places and electrician moving from the Kanpur to Bangalore get the 3 times more salary and no on the moving of Bangalore to Switzerland is earn 20 more times more. The higher salary reflect the higher productivity of electrician customer in the Bangalore. If every citizen lived in Bangalore, India GDP will be more than the China and Switzerland. Then the 9 million people product the more than GDP than the Indian 20 million 220 million farmers. इसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. Here inward I over the career spanning over the 5 decades, the any corruption turned into art of the mirror into the political act of record and rebellion. The turning of odd against the book at again the year's Nobel Prize for the Literature received for the French monumentalist Annie Masson, who explored the self of the self and its potential implication on social and political life has long marked the champion and what French President Emmanuel Macron tweeted her after her win, the collective and the inventive memory of the France, yet the adverse 82 does not speak only for the nation. In recent years, he ability to transformation her most of the well-known. She has become the discovered with equal facility in the English-speaking world as testimony over the universality of the feminine experience and the popularity of men as a genre. इस साल के जो लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दी गई है एनी एर्नस्ट को, तो उसके ऊपर ही उनके लिए आर्टिकल दिया गया. आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. लेट्स बीट ऑन द राबड़ी डिबेट. A physical council can help to government to settlement the disbursement of freebies. The debate began with the RBI 2022 report on the state finance allowed to Prime Minister Narendra Modi the comment on the Rabdi culture. A freebies have granted the sustainable extension so much the Supreme Court has sharing the issue and country of millions of people were only the pandemic away for being to push back the poverty and freebies have now assumed more importance than ever. Freebies can be defined easily and constitutionally. Any state government should be empowered to spend its way wants and provide to the physical policy is unsustainable. And such a debate therefore the warrant undertaking the strategic measure via the strengthening physical guidance through an institution like a physical council. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में. ए बीट ऑफ फन. अरविंद केजरीवाल वेल टीम्ड जीब at Delhi Lieutenant General stand out in the grim and humorless times. The description of Indian politics are really on metaphors that are usually violent. The poaching of leaders and battlegrounds acts where state government to pull the even the cut and thrust of debate and in legislature as political become the more polarized and political conversion it turn into increasingly brutally parliament the fermenting center of the debate and deceit is either the setting the disagreement of this concern of being held by the destruction and depending on which the height fence you stand. What तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. जो नेक्स्ट पेज है आइडियल की पेज की. द स्पेक्टर पेडर. There is a vast interest in creating the narrative the minorities in gender and newly emerged Muslim leadership should reject the capability and seize an opportunity that is being offered.
Indian fast citizen are the Adivasi women from the of the remote tribal area and earliest Indian successful Dalit president, Muslim, Christian, other the monasteries hold the high position in government and judiciary and bureaucracy and number of the parliament and legislature in state. Large number of Indian Sikh majority state of Punjab as the Sikh chief minister and Christian majority state Nagaland, Mizoram, Meghalaya have Christianity chief minister and some of the all the license with the BJP and majority welfare ministry across the country, including the Uttar Pradesh, have 40 million Muslim are the hands of the Muslim ministry. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए, आप इसे सेल्फ से पढ़ सकते हैं. स्पिरिट ऑफ टेम्परेनेंस, political harm of alcohol reductive outward the from the individual drinker to wider community. It takes a village to sustain abstentions. We celebrate the 75 years we soon the Gandhi Jayanti and later the recall the early spark of it retrieved on fight against the imperial state and the desire to progress through the self-control. The importance of movement of began the 1880s, especially among the lower caste and tribal of India, become the internal part of progressive and reform the address to poverty, untouchability, domestic violence, illiteracy, etc. It is a first formidable conference and revenue mixing state and answerable to be the subject population of British aggressively encourage the production and distribution and sale of alcohol, exploit the revenue potential and temperance, give out the founder important political platform to struggle against the state and how the forgotten the Gandhi fight against the state power that the leverage the alcoholic to fill the coffer. And we mistake associate Gandhi and with a state-led strong armed policy of provision are the Hasa Mehta close confidence of Gandhi made clear the 1949 the Constitution Assembly debate. Gandhi's objective was in two states having the more role in the production and distribution of alcohol, and he did not support the build of the policy state to be the in for the provision. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देगा ए विलेज बाय द सी protest in the Binjijama port raised the question rule about the state and further of the fishery folk. The ongoing the protest of fishery folk for the past 3 months against the upcoming port projects in Binjama, Kerala raised the important question: why does the political party whose accelerate the class mobilization, electricity decree, a demonstration, non-partisan mobilization and marginalization of the social group like a fishery folk part will be the force the state to push the construction of financial unavailable port projection and contracts to divorce the unfinished assessment of advisory impact. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे, इकोनॉमिक्स पे. में रुपीज ड्रॉप बिलो द 82 ऑन द रिसेशन फेयर एंड क्रूड स्पाइक. जो रुपीज की वैल्यू 82 के लेवल में अब गिर चुकी है 82.33 पर डॉलर यूएसए के. तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए. फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन द 4.85 बिलियन और इंट्राडे लो में 82.43 हो चुकी है रुपीज की वैल्यू. और इसके कारण है रिसेशन के फियर और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से ओपेक प्लस के जो ऑयल सप्लाई में कट किए गए तो उसके रिलेटेड ये फिर से रुपीज की वैल्यू गिरावट देखी गई है. बाइडेन बीड इनवाइटेड फॉर द आईडीबी बैंक स्टेक सेल. गवर्नमेंट एलआईसी सेल टू 60.72%. गवर्नमेंट ने फ्राइडे को इनवाइट किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द आईडीबीआई बैंक ऑफर सेल टू टोटल 60.72% stake in bank and including the major proportion of share held by the government and state-run LIC insurance company. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया. और सीसीसी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया न्यू प्रॉब अगेंस्ट द गूगल. इसके पहले से ही 2 केसेस चल रही हैं. तो इन्वेस्टिगेशन अलेज्ड अनफेयर रेवेन्यू शेयरिंग विद द रिफर्स टू न्यूज कंटेंट द स्केल विल बी कंडक्टेड टू अदर ongoing the matter against the search engine measure. तो उसके ऊपर आर्टिकल देगा. क्रेडिट गारंटी स्कीम टू फॉर द स्टार्टअप नोटिस लोन अप टू द 10 करोड़ कोलैटरल फ्री. गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ग्रांट किया है कि स्टार्टअप को under the lender of the extended collateral free loan to 10 crore is the eligible borrower. Alternate the demand to the 244 million for the Pen Road. The Indian authority have the demanded 244 million. The local unit of French Spirit giant Pen Road reached to undervaluing the concentrated import over the decade to avoid the full payment of the duties and government notice into the Reuters show. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो वर्ल्ड फेच की है. यूएसए 1000 गेट मेरिजुआना पार्डन.
No one in jail such for offense, but the move could be help to Thailand overcome the consequential obstacle. Amnesty for the simple operation of the drugs. President Joe Biden pardoning the thousands of Americans convicting the simple possession of the marijuana under the federal law, and the administrative take the domestic step toward the discriminalize the drug and addressing the charging parties to the disproportionate impact of people of color. और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यूरोपियन यूनियन प्रॉमिस टू बेटर डाटा प्राइवेसी। जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द फाइडर टू डिजाइन एलाई यूरोपियन concerned that the US intelligence agency are illegally spying on them and promised to strengthen the safeguards against the data collection abuse and created the forum of legal challenges। तो उसके ऊपर आर्टिकल देगा बाइडेन गवर्नमेंट clampers down on China's access to chip tech, limited sale of the semiconductor and other key chip making equipment। बाइडेन ने रिवेस्टेड फ्राइडे में अनाउंस किया कि वो शॉपिंग कर रहे हैं new limit to sell the semiconductor technology India and China and the state aim to creeping the Beijing allies access the critical technology that are the needed for the everything to super computing to guide the weapon। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बेल्जियम फॉरेन मिनिस्टर कट हेयर टू सॉलिडारिटी विद ईरान वुमेन। जो बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने अपनी सर के बाल काटे हैं जिससे वो सॉलिडारिटी एक दिखा सके जो उन साथ है बल्कि इरानियन वुमेन के साथ में। तो उसके लिए ये आर्टिकल दिया गया है। श्रीलंका टॉप कोर्ट अलाउ टू केस अगेंस्ट द राजापक्सा। जो श्रीलंका की टॉप कोर्ट है उसने अलाउ किया है राजापक्सा जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे तो उनके ऊपर केस के लिए। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। PLI by the Transparency Intelligence alleged the ex-president Gotabaya and his brother would be directly responsible for the economic crisis। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया है। Russian attack and Tesan city with Iranian drones। The death toll from missile attack on apartment building in the south Ukraine city rose to 11 as more the Russian missile and for the first time exclusive package of drone targeting the Ukraine held Zaporizhzhia on Friday। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है। साउथ कोरिया मिलिट्री ऑफ चोर्स फॉर BTS टू इनलिस्ट। जो साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सपीरियंस है वेंट टू द कॉन्फ्लिक्ट मेंबर ऑफ द केप ऑफ sugar group BTS to mandatory military duties and public demand to sharply divided by the whether the should be given to exemption। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल तो स्पोर्ट की है। तो आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस पे इतना ही।